Today is the last unit for Indian Contract Act 1872, and this is the contract of agency. So before starting the unit, I think we should make it clear the concept of contract of agency. Let's take an example. Suppose one Mr. A allows Mr. B to work on his behalf. Mr. A allows Mr. V to work on his behalf. Let's suppose Mr. A asks B to deal with Mr. C on the behalf of C. On the behalf of C. A asks B to work on behalf of A in dealing with Mr. C. So one thing you should note, the person who appoints is called principal, and this person who is appointed to work on behalf of the principal is called agent, and this is the third person, right? Suppose A appoints B as his agent to deal with Mr. C, right? So it's the duty of B to work on behalf of A and according to the directions of A. To work on behalf of A and according to direction of A. For every dealing with C on behalf of A, B is B have to follow the instruction of A, and A is responsible for all the terms and condition of the contract between B and C on behalf of A, because B is the principal. If B do something which is not within his power to work as agent, in that case A is not responsible. If B do something which is not, for which there is no authorization from A will not be responsible, right? This person A should be minor, should not be minor, should not be minor, should not be unsound mind. But B can be minor because in the contract between B and C, the main liability is that of A. In that of A. So the basically agent may be the minor, but A should be the major. Come to the topic agency. This topic covers section 182 to 238 of Indian Contract Act 1872. Let's discuss one by one the meaning of agent. Section 182, we have discussed agent means a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third person. So in the previous example, agent is B. Principal, person for whom such act is done or who is so represented, that is Mr. A, on behalf of B is working. Who can appoint agent means who can be the principal. Any person who is the major and of sound mind means capable to enter into contract. Who can be agent? Any person, even a minor or a person of unsound mind, but they are not responsible to the principal. Means agent can be the minor, can be of the unsound mind. But if any minor or unsound mind do something which is not in the power of power or authority given by the principal, they are not responsible to the principal. See example number 1. A appoints B a minor to sell his old bike at minimum price of 30,000. What is the example? A principal appoints B agent, but B, the agent is minor, to sell his old bike at a minimum price of 30,000. So A clearly instructed B, please sell the bike at minimum of 30,000. But what actually happened?
B sold the bike for 20,000. Now A cannot recover the loss of 10,000 from B because agent was minor. Sir, suppose the B was not a minor, B was major. Whether A can recover the loss of 20,000 from B? The answer is yes. If B is not minor, B is not minor, then he will be responsible. Because A clearly given the instructions to sell at a minimum price of 30,000, even that he sold for 20,000. The loss of 10,000, which is recovered from the minor, from the agent, but because the agent is minor, it cannot be recovered from agent. Consideration, important point. No consideration is necessary to create an agency. This point we also discussed in the chapter unit number 2, consideration. One thing you should note. That it is quite possible that no consideration may be for agency, but it should be clearly mentioned in the contract between principal and agent. What the law saying, sir, consideration is not required in agency, means A can appoint B free of cost, or B can do anything for A free of cost, but it should be clearly mentioned in the contract between A and B. A and B means principal and agent. I'm again repeating my words. In case of contract between principal and agent, it may be mentioned that no consideration should be given from P to A. And if A is giving his consent, the contract is perfectly valid. Afterwards, A can't say, as the contract is without consideration, contract is not valid. So the contract of agency between principal and agent is perfectly valid, even there is no consideration, but consideration should be mentioned. But this point should be mentioned in the contract between P and A. Suppose the amount, what is the consideration, is not given, is not clearly mentioned in the contract, nor it was mentioned that no consideration should be given. ना तो ये मेंशन हुआ कितना कंसिडरेशन दिया जाएगा, ना ये मेंशन हुआ कि कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा. Neither it was mentioned the amount of consideration, value of consideration, neither it was mentioned that no consideration should be transferred from principal to agent. In such case, agent can claim the reasonable construction. So the contract of agency between principal and agent will be valid if it is specifically given in the contract that there is no consideration. But if this clause is not mentioned, no consideration clause is not mentioned in the contract, and the value of consideration is also not mentioned in the contract, the agent can claim the reasonable consideration. Now, modes of creation of agency. Agency may be created by express agreement, by oral or written. It may be created by implied agreement, agency by estoppel or agency by holding out, almost same meaning. Agency by necessity, operation of law, compulsory. Agency by ratification. Ratification means note down, confirmation. Please note down. Okay. So let's discuss one by one. First, by express agreement, section 186 and section 187. The authority of an agent may be express or implied, section 186. An authority is said to be expressed when it is given by words spoken or written, oral or written. And the written form, the written agreement of agency is called normally power of attorney. Power of attorney. The whole movie, the Bajigar, was dependent on this power of attorney.
A appoints B by written agreement, that is power attorney, as his agent to sell his factory. The relationship between A and B is an agency by an express agreement. By implied agreement, section 187 and section 237, an authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case. Section 187. What it says? X of Agra regularly sells goods to Y of Fatehbad. Z of Fatehbad coming to Agra collects the money from Y and pays it to X. What is the case? X regularly sells the goods Y of Fatehbad at some distance. Z of Fatehbad coming to Agra and he collects the money from Y and pay to X. This is the implied agency because X never says to him, and to him means X never says to Z to collect the money from Y. But even that he collected the money and handed over to the X, it is the implied agency. Now let's discuss different modes of agency by implied agreement. First is agency by estoppel or agency by holding out. One thing you should, and let's take an example. Suppose A tells T, A tells T that he is the agent of H. Now let's take P. A tells T that A is the agent of P, and P is listening the point. P is getting what A is saying, but P does not react. So no reaction of P now makes the confirmation to T that actually A is the agent of P. But A was not the agent of P. This is the example once again. A tells T that he is the agent of P. P is getting what A is saying, but does not react. So T thinks that A is saying true. A is actually the agent, but he was not the agent. So this type of agency is called agency by estoppel. Means afterwards, P cannot deny that A is not the agent. मैं हिंदी में बोल रहा हूं इसको. A ने T को बोला कि वो P का एजेंट है. A ने T को बोला कि वो P का एजेंट है. A ने T को बोला कि वो P का एजेंट है. P ने ये सुना लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया. जब कोई रिएक्ट नहीं किया तो T को लगा A सही बोल रहा है. बाद में P इसको डिनाई नहीं कर सकता. हुआ क्या? Afterwards, T has sent some goods on credit to A, thinking that A is purchasing on behalf of P. Afterwards, T sold some goods to A, thinking that A is purchasing on behalf of P. T can demand the payment from P, and P cannot deny that he is not liable because A is not agent. Because at that time when A was saying to T that A is the agent of P, P has not reacted, P has not denied. जरा जब T ने बाद में माल बेच दिया P को, सॉरी A को माल बेच दिया, उसके बाद जब T ने पैसे मांगे P से तो P ने कहा भैया वो तो एजेंट नहीं है A मेरा. मैंने कहा भाई जब आप वो बोल रहा था कि A आप जब बोल रहा था कि मैं P का एजेंट हूं तब आपने क्यों नहीं बोला? इसका मतलब आप लायक. And this law says where the principal by his conduct or the statement willfully induces another person to believe that a certain person is his agent, he is subsequently prevented or stopped from denying the fact of agency. See example number 4. A tells T
within the leaving of P that A is P's agent. P does not object the statement of A. Later on, T supplies certain goods to A who pretends to be acting as agent of P. Now P is liable to pay the price to T. Please read once again. One more example. P allows his servant habitually to purchase goods for him on credit from T and pays for them. P allow करता है अपने सर्वेंट को नॉर्मली किस लिए गुड्स उधार खरीदने के लिए टी से एंड बाद में पेमेंट कर देता है. ऑन वन ओकेशन he means P pays his servant cash to purchase the goods. The servant misappropriates the money and purchases the goods on credit from T. Now T can recover the price from P as he had held out his servant as agent on prior occasion. P normally allows his servant to purchase from T on credit and afterwards P makes the payment. But what actually happened once P may gave him the cash, him means servant, gave the servant cash to purchase the goods on cash. But servant misappropriates the amount and purchase the goods on credit again. Now T can recover that price from the P. Sir, what about the cash which is misappropriated by the agent, appropriated by the servant? Now that amount can be recovered by P from agent. Now P will file the suit, whatever he do lawfully to recover the amount from agent, but he has to make the payment to T. तो टी को पेमेंट करना पड़ेगा. जो अमाउंट चुरा के भाग गया सर्वेंट वो उससे रिकवर करेगा, बाय कोर्ट जाएगा, बाय पुलिस के थ्रू जाएगा, व्हाटएवर लॉफुल तरीके से. नेक्स्ट पॉइंट, एजेंसी बाय नेसेसिटी. दिस एजेंसी इज क्रिएटेड ड्यू टू इमरजेंसी. An agency agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. Means agent has right to do anything to save his principal from loss what a normal person do for himself. एजेंट को अथॉरिटी होती है इमरजेंसी में वो सारे काम कर सकता है प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए जो एक नॉर्मल बुद्धि का आदमी करता. See, the master of a ship on finding that the cargo is rapidly perishing. The master of a ship finding that cargo means goods on the ship is rapidly perishing is entitled to dispose it of at the best available price so as to bind the consignor as an agent by necessity. The master of a ship on finding that the cargo is rapidly perishing, लग रहा है कि माल खराब हो रहा है बार बार, is entitled to dispose it of at the best available price so as to bind the consignor as an agent by necessity. Note, when husband and wife living together, the husband does not provide the necessities, the wife has an implied authority as an agent to pledge her husband's credit for bare necessaries. Means if husband and wife living together, the law provides that the wife can use the credit, wife can purchase the necessaries on the name of her husband, and husband has to make the payment. R is the wife of P. She purchased some saris on credit from Q. Q demanded the amount from P and P refused. Q can recover the said amount from P if saris purchased by are necessaries. If wife purchased the saris for amount 1,500, 2,000,
it is the part of necessary. If she purchased for 5 lakh, it is not the part of necessary, right? In that case, husband will not be responsible. So it should be the necessary. Now the agency by ratification. Ratification means confirmation. Where a person acts for someone without his knowledge or authority, without his knowledge, where a person acts for someone without his knowledge or authority and the other person subsequently accept or ratifies, accept or confirm the act, agency by ratification arises and the ratifier is bound by the act as if he had expressly authorized the person to do the act on his behalf. Means if one person is working as an agent for someone, if one person is working as an agent for someone without any authority, without being authorized, but afterwards that someone accept his act, accept his work, then it is called agency by ratification, and it will be presumed like that the agent was expressly authorized for doing that work. अगर कोई आदमी किसी की परमिशन में कुछ कर रहा है तो और वो किसी बाद में से एक्सेप्ट कर लेता है तो हम बोलेंगे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. सी एग्जांपल नंबर 8. A ensures P's good without his authority. A ensures P's good without his authority. If P ratifies A's act, the policy will be valid as if A had been authorized to insure the goods. What is the example? A get insurance of the goods of P without being authorized to do so. But afterwards, P accepts that insurance policy, so it is called agency by ratification. Ratification may be expressed or may be implied by the conduct of the person on whose behalf the act uttered. See example number A. A without authority buys goods for A, afterwards P sells them to T on his own account. A without authority buys goods for P. A is not authorized to purchase the goods, even that he purchased the goods on behalf of P. Afterwards, P sells them to T. It means P has accepted what he purchased, what the A purchased for him. And this is called implied ratification. This is called implied ratification of the agency by principle. Essentials for a valid ratification. Important question as a direct question for your exam of 5 to 6 marks. There may be important question for 5 to 6 marks as a direct question. What are the essential of a valid ratification? The principal must be in existence at the time when act was done in his name. He is saying the principal must be in existence. When agent was doing the work, principal must be in existence. Principal must be capable to enter into the contract. Principal must be capable to enter into the contract, means principal should not be minor, should not be unsound mind, both at the time of contract and at the time of ratification. Both at the time of contract and at the time of ratification. It means when the contract was entered by agent or when the principal ratified the act of the agent. Both at the time principal should be contractually capable. Ratification must be with the full knowledge of facts. Means when principal is making the ratification of the act of the agent, he should have full facts of what the agent actually done. See example number 10. A has authority from P to buy certain goods at market rate. A has an authority from P to buy certain goods at a market rate. He buys the rate at a high, he means agent. Agent buys at higher rate, but P accepts the purchase. P has authorized A to purchase the goods at market price, but what actually done? Agent has purchased at higher rate
and afterwards P accept that purchase. But after a time, P comes to know that the goods purchased by A for P belongs to A himself. Actually, A has sold his own goods to P. This was hiding of facts. The ratification by P is not binding on. उसने छुपाया, उसने कहा था भैया मार्केट रेट पे खरीदना है, महंगे रेट पे खरीद लिया. पी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा पी को, क्या मालूम पड़ा बाद में पी को, कि ये तो इन्हें अपना ही माल बेच दिया मुझे. तो दिस ratification is not binding. Ratification must be within reasonable time, and what is reasonable depend upon the situation to situation. Only lawful act can be ratified or accepted. Unlawful act cannot be ratified. If an agent do anything unlawful, ratification is not valid. The whole transaction must be ratified. Ratification of part of the transaction will considered as ratification for whole transaction. Means if agent has purchased 100 kg of goods and principal says I accept only 20, no, it should be for 100. If the principal accept for 20, it means that acceptance for whole goods. Again, the whole transaction must be ratified. Ratification of part transaction will be considered as ratification for whole transaction. 100 किलो खरीदा, कहता मतलब 20 एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं, ये माना जाएगा उसने पूरा एक्सेप्ट कर लिया, भले ही वो 20 कहता. Ratification must be communicated to third party so as to buy. Third person to whom agent has under the contract. Ratification can be of the acts which the principal had power to do. The principal can accept only those things for which he is authorized. Suppose agent says agent has sold the Taj Mahal by saying that he is doing on behalf of the principal. So principal has no power to sell. Then how he can ratify the act? So ratification can be done for those acts for which principal is authorized. Ratification should not put a third party to damage. There should not be such that by ratification a third party is under the law. See example number 11. T holds a lease from P. T holds a lease from P terminable on 3 months notice. T holds a lease from P terminable on 3 months notice. Means if T is having some land on lease from P, and P can revoke that lease by giving the notice of 3 months. 3 months he should inform 3 months prior to the revocation termination. A, an unauthorized agent who is not authorized by principal, give the notice of termination to T. Give the notice to T by saying that please vacate the land. खाली करो इसको, तुरंत खाली करो, immediately. The notice cannot be ratified because by doing so, T has to lose. P has to lose. Because भैया 3 महीने नोटिस देना था, आप तुरंत खाली नहीं करा सकते, P से एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है. थर्ड पार्टी को जब when the contract was clearly mentioned, in the contract that was clearly mentioned that there should be a notice of 3 months for vacation or termination, then agent principal cannot do with cannot accept the ratification of agent. Please read. सर चैट बॉक्स अलाउ कर दीजिए बच्चों की क्वेरीज के लिए. Done, sir. Okay, sir. If any query, example 5. Example 5. What is the example 5? कि P ने अपने सर्वेंट को कहा भैया तुम उधार माल खरीदो. अक्षित, लिसन बेटा. P ने अपने सर्वेंट को बोलता है उधार माल खरीदने के लिए, सर्वेंट लाता है और P पेमेंट कर देता है. बट एक्चुअली क्या हुआ, एक बार उसने कैश दिया,
लेकिन सर्वेंट ने वो कैश को चोरी कर लिया, उधार माल खरीद लिया. नाउ इन दिस केस, बिकॉज नॉर्मली क्या हो रहा था कि वो सर्वेंट जो था वो हमेशा माल खरीद रहा था उधार, तो ये दुकानदार को उसने, प्रिंसिपल ने दुकानदार को नहीं बताया कि मैंने इसको आज कैश दिया है, तो इस केस में प्रिंसिपल लायबिल हो जाएगा. लेकिन प्रिंसिपल डेफिनेटली सर्वेंट से केस करके उसको पैसे को रिकवर कर सकता है. नंदनी, आपकी क्वेरी में लास्ट में पूछना मुझसे, क्योंकि आपकी क्वेरी यूनिट नंबर 4 की है, तो वो लास्ट में पूछिए. अभी इससे कनेक्टेड क्वेरी पूछिए, रेलेवेंट क्वेरी पूछिए. एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? इम्प्लाइड बाई कंडक्ट होती है, जैसे कंडीशन कोई नहीं है, बाई कंडक्ट है. बिहेवियर एक्चुअली कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन बाय बिहेवियर एजेंसी क्रिएट हो गई. हर्षित सर, सेक्शन 189 में एजेंट का ऑब्लिगेशन होना चाहिए अपने प्रिंसिपल के लॉस को मिनिमाइज करने का, रेदर देन राइट. डेफिनेटली सेक्शन 189. एनीथिंग एल्स? फर्स्ट क्वेश्चन, टू whom the agent is responsible? Principal, sub agent, contractor, none of these. A person employed to do any act and represent is called agent, principal, owner, servant. Under section 185, is consideration necessary to create agency? No, yes, as per contract according to circumstances. Who can become an agent? Both minor and adult, minor, adult person, dead person. To create an agency, space is not required. Principal, consideration, agent, third party. How the agency is created? By necessity, by ratification, either A or B, none of the above. Akshit, your query for valid agency by necessity condition. The condition, basic condition is there must be a real necessity, not just a thinking of agent. ऐसा नहीं कि एजेंट को लग रहा था नेसेसिटी है, वास्तव में नेसेसिटी होनी चाहिए. To whom the agent is responsible? Principal. A person employed to do any act and represent is called agent. Under section 185, is constitution necessary to create agency? No. Who can become an agent? Both minor and adult, because ultimate responsibility is that of principal. To create an agency, consideration is not required. How the agency is created? Either A or B. So let's see. Mr. Akshit Gupta, Vishnu, Ikra,
स्नेहा, वैलिड रेटिफिकेशन का एफ पॉइंट पता है मैंने बेटा, द होल ट्रांजेक्शन शुड बी रेटिफाइड। अगर किसी ने 100 किलो खरीदा है तो 100 का रेटिफाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। अगर वो 20 का रेटिफाई करता है तो पूरा माना जाएगा। ठीक है। आई पॉइंट, रेटिफिकेशन ऐसा ना हो जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाए। एग्जाम्पल 11 को पढ़ो, क्लियर हो जाएगा बेटे। उसमें क्या लिखा था कि टी ने एक लीज पे लैंड लिया है कितने, उससे पी से, जिसमें रखा है कि अगर खाली करना है तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। बट एजेंट ने क्या, एक पर्सन ने क्या किया, एजेंट बन के उनसे कहा खाली करो। पी उसको रेटिफिकेशन देता है, ठीक है मैंने कहा था, नहीं कर सकता क्योंकि इससे क्या होगा, थर्ड पर्सन नुकसान हो जाएगा, उसके बाद घर खाली करना पड़ेगा। Sir, can you please tell the main distinct between the agent and the servant? The main distinct is the servant can work as an agent, but the agent cannot. Right? Sir, chat disable कर दीजिए please अब। Unsound mind डिस्कस कर सकते हैं सर। अप टू अनसाउंड माइंड से कोई लायबिलिटी क्लेम नहीं होगी। सर चैट डिसेबल कर दीजिए प्लीज। So Done, sir. now the second part of the unit number 9, extent of agent's authority, कि up to what extent agent is authorized. Agent's authority in normal circumstances. In normal circumstances. Section 188. In normal circumstances, an agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. Means for which the agent is authorized, for which duty the agent is authorized. To complete that duty, the agent can do every lawful thing which is necessary for doing that duty. See example number 12. A is employed by B residing in London to recover Bombay a debt due to B. Means A was employed by B and A is residing in the London. A is residing in the London. He appointed B to recover Bombay. Sorry, listen. A is employed by B residing in London. A is appointed as an agent. A is appointed as agent by B the principal, and principal is residing in London to recover at Bombay a debt due to B. कि B has appointed A in Bombay to recover any debt which he has to recover. तो बी ने कहा भैया ए से कि मैं, ए तुम बॉम्बे में हो, मैं लंदन में हूँ, तुम लोन है मेरा किसी से लिया हुआ, किसी से मैंने लोन रिकवर करना है तो आप रिकवर कर लो मेरे बिहाफ पर। A may adopt any legal process necessary for recovering the debt and may give a valid discharge for the same. Means for recovering the debt, A may do any legal process which is required to recover for the debt. An agent having authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in course of or conducting his business. Means if a person is appointed as agent, if a person is appointed as agent for doing business, then for running that business the agent can do anything for running that business lawfully. And what usually done in the course of such business. See example number 30. A constitutes B his agent to carry on the business of a shipbuilder. A constitutes B his agent to carry on his business of a shipbuilder.
B may purchase timber and other material and hire workmen for the purpose of carrying on the business. Means ज्यादा सिंपल भाषा में अगर मैं हिंदी में बात करूं, हिंदी में कन्वर्ट करूं अपनी बात को, तो क्या कह रहा है कि अगर कोई एजेंट अपॉइंट किया था बिजनेस चलाने के लिए, तो बिजनेस चलाने के लिए वो सारा काम कर सकता है जो एक नॉर्मल आदमी लॉफुली उस बिजनेस चलाने के लिए करेगा. जैसे कि एग्जाम्पल 13 में क्या कहा है उसने, ए ने बी को अपॉइंट किया एजेंट कि शिप बिल्डिंग, जो शिप होते हैं ना बनाने का काम करना है, तो इसके लिए वो लकड़ी भी खरीदेगा और अदर मटेरियल रिक्वायर्ड वो भी खरीदेगा, लेबर हायर करेगा, किस लिए, इस बिजनेस को चलाने. प्लीज रीड एग्जाम्पल 12 and 13. सर अनम्यूट ऑप्शन लास्ट में होगा, मिस्टर वी माज. Agent authority in case of emergency. We have discussed in short in previous slides. In emergency, an agent has authority to do all such acts for the purpose of protecting the principal from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case. In his own case, जो वो अपने काम में करता ना, अपने लिए करता, अगर वही कर रहा है तो that is perfectly valid. See example 14. An agent for sale may have goods repaired if it is necessary. If I appointed a person as agent to sell my goods, but if agent thinks that goods is perishing, he can take the repair, and that is valid. Example 15 already discussed with you. The master of a ship, on finding that the cargo is rapidly perishing, is entitled to dispose it off at the best available price so as to bind the consignor as an agent by necessity. But in case in case of agency by necessity, in case of emergency, he has to prove, the agent has to prove that he has done due to the actual emergency was there. The actual emergency was there. Please read the example 14 and 15. Delegation of authority, handing over. Delegation of authority, section 190, handing over. The general rule is that an agent cannot appoint an agent. Agent cannot appoint an agent. Means principal has appointed agent to do something for his behalf, and for that work agent cannot appoint another agent. Normal rule. This based on the Latin principle delegatus non potest delegator. Delegatus non potest delegator, which means delegate cannot further delegate. Delegate cannot further delegate. मतलब अगर कोई काम दिया गया है किसी को तो वो उसको आगे डेलीगेट नहीं कर सकता. Many of you in my previous experience have the problems of what is the meaning of delegators non-potest delegate. Sir, it was clearly mentioned before you. Delegators non-potest delegate means a delegate cannot further delegate. An agent being a delegate cannot transfer his duties to another. कि भाई मैंने अगर आपको काम सौंपा तो आप ही करना है ना, आप किसी और से नहीं करा सकते. Exception to the above rule. Important point. Exception to the above rule. An agent may appoint an agent in the following circumstance. In following cases, an agent may delegate his duty to another person. In the following cases, an agent may appoint an agent. First, where expressly permitted by the principal. Where expressly permitted by the principal. Principal ने specifically कहा भैया appoint करो. Where the ordinary custom of trade permits. Means it is the tradition of the trade for which he is appointed an agent. For example, I have a
garment shop, ready-made garment shop, and I appointed Mr. X as an agent for sale of that goods. He appointed some salesman. So this is the ordinary custom he can appoint. कि मेरे पास एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप थी, मैंने उसके लिए एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, भैया आप माल बेचो, मैं तो अवेलेबल नहीं। अब उस एजेंट ने क्या किया, कुछ सेल्समैन हायर कर लिए माल बेचने के लिए, तो ये नॉर्मल ट्रेडिशन है। दिस इन दिस केस सब in this case agent of agent is allowed. The nature of agency is such that it cannot be accomplished without the appointment of sub-agent. Means if the agency is such type that sub-agent is necessary. We will discuss in further slides the cases where the nature of the job assigned to agent is purely clerical, only typing, writing, pure clerical, not required any personal skill. Purely clerical means not required personal skills, not requires any personal skills. And in an unforeseen emergency, अचानक कोई emergency आ जाए तब ये काम हो, in an unforeseen emergency. So this question may be asked for 4 marks as a direct question in your exam. What is the mean by delegation authority? In what cases an agent may appoint the agent? Please read these 5 points fastly. Now the concept is sub-agent, section 191. Delegation of authority by the agent result in appointment of sub-agent. A person who is appointed by agent is called sub-agent. When a person is appointed by agent is called sub-agent. Means agent of agent is called sub-agent. Status of sub-agent: the sub-agent acts under the control and direction of the original agent. Under the control and direction of original agent. जो original agent कहेगा वही काम करेगा. The relationship between sub-agent and agent is that of principal. Like that. Principal, agent, and sub-agent. For this relation, he is principal and he is agent. There is no privity of contract between principal and sub-agent. Means a principal and sub-agent cannot directly connected to each other, because sub-agent is appointed by agent, and principal cannot sue the sub-agent except for fraud or willful wrong. It means if anything wrong done by the sub-agent, then principal can claim from the agent, not directly from the sub-agent. But in case of fraud or knowing willfully wrong, जानबूझ कोई गलत किया हो, धोखा दिया हो, then principal can directly file the suit against sub-agent. Please read these 4 points. Consequences. Important point. Please note down, read carefully, learn carefully. Where a sub-agent is properly appointed. Properly appointed means with the knowledge and permission of the principal. Principal is liable to third parties for the act of sub-agent. For third parties means if sub-agent is doing anything wrong and the third party has to suffer loss, then principal is liable. Agent is responsible to the principal for the acts of sub-agent. If anything wrong done by the sub-agent and principal has to pay the compensation to the third party, then he can recover from the agent. The sub-agent is responsible for the acts to the agent and not to the principal, except in case of fraud and willful. Please read ABC. Please read point ABC. Where a sub-agent is improperly appointed.
improperly, not with the permission of the principal. Principal is not liable to third parties for the acts of subagent. Agent is responsible to the principal as well as to third parties for the acts of subagent, and subagent is not responsible to the principal for anything. He is responsible only to the agent. Please read the 3 points of 192 and 3 points of 193. रीड कीजिए बच्चों ध्यान से. Done? Okay. Now, substituted agent. The relationship between the relationship of principal and subagent and the principal and substitute agent like that. Subagent is like that, principal, agent, and subagent. But in subagent. But in case of substituted agent, the relationship is like that, agent and substituted agent. क्लियर नहीं हो रहा, मैं यहां बना देता हूं. प्रिंसिपल, agent, and substituted agent. Means substituted agent is appointed by agent but on behalf of the principal. Substitute agent means the person appointed by the agent but on behalf of the principal. Section 194 provides substituted agent is a person appointed by the agent to act for the principal in the business of agency with the knowledge and consent of the principal. Such person is not a subagent. See example number 16 and 17. A directs B to sell his estate by auction. Estate, you can say the property. A directs B to sell his property by auction and to employ an auctioneer जो auction कराता है. For the purpose, B suggests C an auctioneer to conduct the sale, and C is not a subagent but is A's agent for the conduct of sale. क्या है example? A has appointed B as agent to sell the property by auction. A ने B को बोला भैया मेरी प्रॉपर्टी बेच दो. अब उससे कहा एक ऑक्शनियर जो ऑक्शन करवाता है, नीलामी करवाता है, नीलामी करने वाला, उसको अपॉइंट कर लो. बी ने नाम सजेस्ट किया सी का, भैया ये सही है, इसको आप हम अपॉइंट कर सकते हैं. ए ने कहा ठीक है आप कर लो. इट मींस सी द ऑक्शन वाज अपॉइंटेड even by B but on behalf of A, and C in this case is the substituted agent, not the subagent. One more example, 17. A has to recover some money from Jet and Company of Delhi. A has to recover some money from Jet and Company of Delhi. He authorizes B, a merchant in Delhi. Merchant, something you can say the agent, who do such type of work to recover money. बी ने क्या, ही ऑथराइज बी, ए को कुछ पैसा रिकवर करना था जेड एंड कंपनी से दिल्ली में, उन्होंने बी को ऑथराइज किया रिकवर करने के लिए. बी इंस्ट्रक्ट्स डी अ सॉलिसिटर लाइक यू कैन द लीगल कंसल्टेंट टू टेक लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट जेड एंड कंपनी. बी ने कहा भैया ए को बोला कि डी को अपॉइंट करना पड़ेगा लीगल एडवाइजर. सो इन दिस केस
if D is appointed even by B, he is not a sub-agent, he is the substituted agent, because D even appointed by B, he is working on behalf of A. So this is called the substituted agent. Please read example 16 and 17. It means a substituted agent is a person who is suggested or appointed by agent but on behalf of the principal. So while suggesting the name of substituted agent, while suggesting the name of substituted agent, it's the responsibility of agent to take proper care. C. In selecting such agent's authority in naming such person, section 195. In selecting such agent for his principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. And if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. Means when an agent is giving the name of substituted agent, he should exercise all the all the all the care while he what he do for his own case. कहता है कि अगर जब एजेंट नाम सजेस्ट करता है ना सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का, उस वक्त उस वक्त उसे बहुत केयर करनी है, वो केयर जो वो अपने लिए करता, वही सोच ले कि वो अपने लिए काम कर रहा है. एंड इफ द एजेंट डू सच केयर, टेक सच केयर, and anything wrong done by the substituted agent, the agent will not be responsible. Me, again I'm repeating, if the agent take proper care while suggesting the name of substituted agent, and that substituted agent do something wrong, then agent will not be responsible. See example number 18. X appoints Y as his agent to purchase a old cold storage for him. X appoints Y as the agent to purchase a old cold storage for him. Y appoints Z. Y appoints Z, a civil engineer, to calculate the worth of that old cold storage with the permission of X. X ने अपॉइंट किया किसको? Y को एजेंट, कि भैया एक कोल्ड स्टोरेज खरीदना है मुझे पुराना. Y appoints Z, a civil engineer, to calculate the worth of that old cold storage with the permission of X. So Z is the substituted agent. Z worked negligently, and thereafter it was found that coal was not worthy as per report. Hence, Y is not responsible for the negligibility of Z. Z will be personally liable for any loss to X due to his negligence. One more example, example number 19. A consigns goods to be a merchant for sale. A consigns goods to be a merchant for sale in due course. B in due course employs an auctioneer in good credit to sell goods of A and allows the auctioneer to receive the proceed of the sale. The auctioneer afterwards become insolvent without having accounted for the proceeds. Now B is not responsible to A for the proceeds. What actually happened? A has given some goods B. B is the agent for sale. And B in due course, proper care leke, employs an auctioneer, and auctioneer become insolvent. Auctioneer has sold the goods, collected the money and become the insolvent. ए ने अपॉइंट किया बी को, भैया तो मेरा माल बेच दो. बी ने एक नॉर्मल प्रोसेस से प्रॉपर केयर करके नीलामी का ऑक्शन कराने के लिए एक ऑक्शनर को अपॉइंट कर दिया. ऑक्शनर ने सेल कर दी, पैसा कलेक्ट कर लिया, लेकिन पैसा हैंड ओवर करने से पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया. इन दिस केस बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द proceeds. A can claim the proceeds only from the auctioneer, not from the B. Please read example 18 and 19.
सर चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए प्लीज. Difference between sub agent and substitute agent may be a direct question in your exam. Have 7 points. Please read yourself. ये आप अपने आप से पढ़ लीजिए, बहुत इजी पॉइंट्स हैं. सर चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए प्लीज बच्चों के लिए. Please ask your queries up to this point. Properly appointed C point for section 192 or 193. Improperly appointed sub agent is not responsible for the principal for anything, and anything wrong done by the sub agent can be claimed only from, principal can claim only from the agent, right? B point, agent is responsible. What B is saying, B is saying the agent is responsible to the principal third party, and third party, it means third party can claim for anything wrong done by the sub agent. The third party or the principal can claim from the agent. अगर थर्ड सब एजेंट कोई गलती करता है, नुकसान होता है, तो थर्ड पार्टी को या प्रिंसिपल को वो केवल एजेंट से क्लेम कर सकते हैं, सब एजेंट से नहीं. यही पॉइंट, यही बात सीमेक रिपीट कर रहा है. अनफॉर्सीन, अचानक से कोई आ गई, पहले से पता नहीं था. अनफॉर्सीन इमरजेंसी, अचानक से आ गई कोई. सर agency and auction are, you can say, listen, auction is different, which is given in Sale of Goods Act 1930, and agency is very wide concept which is given in Indian Contract Act. Okay, Arjun. Exceptions, which slide number? Akshay, please tell me. अच्छा, प्लस slide 27. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि the nature of agency is such that it cannot accomplish without the appointment of sub agent. कि वो एजेंसी इस तरह का काम, एजेंसी इस तरह के काम के लिए दिया गया है जिसमें सब एजेंट अपॉइंट करना ही पड़ेगा. मैंने आप एक ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई घर बना दो, तो एक उसे खुद तो बनाएगा नहीं, लेबर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा. और फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है कि नेचर ऑफ जॉब इज प्योरली क्लरिकल. पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, केवल लेटर टाइप करना है, कुछ लिख के भेजना है, चिट्ठी भेजनी है. दिस इज क्लरिकल. ओके अक्षित. एनी अदर क्वेरी? सेक्शन 188. सेक्शन 188 तो बहुत बड़ा है, शॉर्ट में समझ लो. कहता है कि सेक्शन 188 कहता है कि एजेंट को वो नॉर्मली सारे काम कर सकता है लॉफुली जिस काम को करने के लिए उसको ऑथराइज किया गया है. अगर मैंने किसी को एजेंट अपॉइंट किया है अपनी दुकान चलाने के लिए, तो भैया स्टाफ भी अपॉइंट करेगा और जो बिजली का बिल भी पे करेगा, वो सारे काम कर सकता है उस एक्चुअल वर्क को चलाने के लिए. एनीथिंग एल्स? 189 में तो एक ही पॉइंट था ना. 189 में तो एक ही पॉइंट है बेटा. इमरजेंसी में, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इमरजेंसी केस में वो सारे काम कर सकता है एजेंट जो वो नॉर्मल आदमी करता अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने. सो कम टू द LPL2. LPL2 फर्स्ट क्वेश्चन. Space is a person employed by and acting under the control of original agent in the business of agency. A substituted agent, sub agent, mercantile agent, universal agent. Who appoints sub agent? Owner, principal, main agent, servant.
A substituted agent acts on behalf of principal, sub-agent, agent, none of these. A substituted agent is appointed by space to act on behalf of space. Agent, principal, agent, principal agent, sub-agent, agent. The power given to agent is reasonable and unreasonable, express and implied, legal, illegal, all the above. Which is the correct statement? Where a sub-agent is improperly appointed, principal is not liable to third parties for the acts of sub-agent. Agent is not responsible to the principal as well as the third parties for the acts of sub-agent, both A and B, none of these. Example 15 एक्सेस सुन लीजिए कि मास्टर ऑफ शिप जो शिप चला रहा था उसे देखा कि जो गुड्स था किसी का गुड्स लेके जा रहा था वो खराब हो रहा था तो उन्होंने जो बेस्ट प्राइस मिला वो बेच दिया. दिस इज द एजेंसी इन इमरजेंसी. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट आंसर is a person employed by and acting under the control of original agent is sub agent. Who appoints sub agent? Main agent. A substituted agent acts on behalf of the principal. A substituted agent is appointed by agent on behalf to act on behalf of the principal. The power given to agent is reasonable and unreasonable, express implied. It is express implied. Which is the correct statement? Principal is not liable to third parties for the act of the sub-agent. This is the right answer because agent will be responsible for both principal and the third person. एग्जाम्पल 18 में भैया जेड तो रिस्पॉन्सिबल होगा. जेड ने ही तो गलत रिपोर्ट दी थी अक्षित. एग्जाम्पल 18 में जेड ने गलत रिपोर्ट दी थी तो जेड ही रिस्पॉन्सिबल होगा. एग्जाम्पल 19 में बी एजेंट है तो वो भी अगेन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा दोनों एग्जाम्पल में 18 और 19 में. राइट. 18 में जेड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा. 19 में भी एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. लेट्स सी who has given the correct answer. Mr. Deepak Gautam, Vishnu, Ikra, no one here. So at this place we are having a break of 5 minutes. Yes, Akshit. यहाँ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. सब ब्रेक दे दीजिए बच्चों को 5 मिनट का प्लीज अलाउ. थैंक यू सर.
नहीं नहीं नहीं, आपने शायद एग्जाम्पल, जस्ट अ मोमेंट। Akshit, which example? The example 17 you are talking with. Listen, in this example, B instruct D is a solicitor to take legal proceeding. B ने एक वकील को हायर किया, बट किसके बिहाफ पर किया? ए के बिहाफ पर, क्योंकि वो खुद लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता ना। तो इस केस में मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? सॉलिसिटर मतलब होता है एडवोकेट, कोई लीगल कंसल्टेंट। क्यों किया? क्योंकि वो ए का पैसा रिकवर करना है। तो जो डी को अपॉइंट किया गया वो ए के बिहाफ को अपॉइंट किया गया, तो वो सब्स्टिट्यूट एजेंट है, ना कि सब एजेंट। ओके। सर चैट बॉक्स डिसेबल कर दीजिए प्लीज अब। ओके अक्षित, नाउ द टॉपिक इज ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एजेंट। ड्यूटीज ऑफ एजेंट, फर्स्ट, to carry out the work undertaken according to the directions given by the principal. It's the first duty of agent to do work according to the direction given by the principal. He should not use his own powers. He should work according to the directions of principal. Otherwise, he will be personally responsible. The principal instructed his agent to deliver goods only against cash, but the agent delivered them on credit. He was held liable for the price which the purchaser failed to pay. What is the example? Principal instructed his agent to deliver goods only against cash. It means agent has to make cash sale only. But even that agent sold the goods on credit. Now, if the third person who is the purchaser of goods fails to make the payment, agent will be personally responsible. प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स डिलीवर किया, प्रिंसिपल ने एजेंट को डिलीवर किया कि भैया इसे बेच दो, केवल कैश बेचना, उधार मत बेचना। अगर एजेंट ने फिर भी उधार बेच दिया और वो जो बायर था उसने पैसे नहीं दिए, तो एजेंट विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। इन द एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्शंस, in the absence of such direction, if no specific direction is given by the principal, if no specific direction is given by the principal, agent should follow the custom means tarika of the business at the place where such business is conducted. Means if no specific direction is given by the principal, then agent must follow the all the customs or all the way which is used by another businessman in the same area. See example number 21. P appoints A as his agent for his business. P appoints A as his agent for his business, in which it is the custom to invest from time to time at interest the money which may be in hand. क्या है example? P appoints A as his agent for his business, and in which it is the custom in that business it is the custom to invest the money time to time at the interest, and the money which may be in the hand of in his hand. Means पी ने अपॉइंट किया ए को अपना बिजनेस चलाने के लिए, और उस बिजनेस में क्या ट्रेडिशन है कि जो पैसा आता है ना उसे वो ब्याज पर जमा कर देते हैं, बट ए omits to make such invest. अब क्या हुआ? But A has not made any investment of that money, by which there is loss of interest to the principal, and such loss of interest can be recovered by the principal from the agent. P ने अपॉइंट किया A को, किस लिए अपॉइंट किया? कि वो बिजनेस चलाए, और उस बिजनेस का एक तरीका है कि जो पैसा आता है उसको लोग सब क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ब्याज पर।
एजेंट ने ऐसा नहीं किया, तो इससे क्या हुआ, लॉस हुआ प्रिंसिपल को, ब्याज का, इंटरेस्ट का। वो लॉस कौन रिकवर कर सकता है, पी रिकवर कर सकता है, किससे, एजेंट। टू कैरी आउट द वर्क विद रीजनेबल केयर means if an agent is authorized to do anything on behalf of the principal, it was the duty of the agent to take proper reasonable care. And what is the reasonable care? Reasonable care means what should he do for his own duty, जो वो अपने लिए करता तरीके से वही से करना है। See example number 22. A of India appoints B as his agent to collect money from A's customer and to transfer in A's account. A of India appoints B as his agent to collect money from A's customer and to transfer it in A's account. B retains the money for considerable time. A of India appoints B as agent. B is the agent and he has to collect the money from the customer of A and to transfer the money into account of A. But B retains the money with himself for a long time. For a long time. A in consequence of not receiving the money become insolvent. अब A को टाइम पे पैसा नहीं मिला, A become the insolvent. Now B is liable for the money and interest from the day on which he ought to have been paid and for any further direct loss as example by variation rate of exchange. A को A ने अपॉइंट किया B को, भैया मेरे विदेश में मेरे कस्टमर है, उनसे पैसा लो और मुझे वापस करो। एजेंट ने पैसा कलेक्ट तो किया लेकिन लौटाया नहीं, उससे क्या हुआ, ए को पैसा नहीं मिला, ए इंसॉल्वेंट हो गया। अब ए क्या रिकवर करेगा बी से, जो लॉ इंटरेस्ट किस दिन से, जिस दिन आपको जमा करना था उससे लेकर अब तक का, प्लस और कोई एक्सचेंज रेट। भाई फॉरेन से पैसा आएगा तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज में आएगा। इफ द मनी इज रिसीव फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, दैट इट विल बी द फॉरेन एक्सचेंज रेट शुड बी देयर। So if any variation, any loss due to the variation of foreign variation in the rate of exchange, that should also be recovered from the agent. One more example, 23. A of the England directed his agent B of the Bombay to purchase 100 bags of cement for him and send to him by certain ship. A of England directed his agent B of Bombay. B agent hai, but it lives in Bombay. And B has to purchase 100 bags of cement for A and to deliver on a ship. And that ship delivered the goods to A. At that time, the price of each bag was 350, but B omitted to do so. Price was 350 था उस समय, लेकिन B ने क्या किया, goods supply नहीं किया. B omitted to do so. B भूल गया. The ship arrived safely in England. Then the price of cement was rises to 400 per bag. Price कितना हो गया now? The 400 per bag. Now A has to purchase additional price of 50 rupees, so he can recover the loss of 5,000. 50 rupees for 100 bags. He can recover loss of 5,000 from the agent. Please read the example 22 and 23. To present proper accounts to his principal means it's a duty of agent to hand over all the money collected by him for his principal. जितना पैसा प्रिंसिपल के बिहाफ पे मिला है वो उसे हैंड ओवर करना. To communicate with the principal in case of difficulty. While doing the duties of agency, if agent suffers some problem, he should contact with the principal, not he should take his own decision. Not to deal on his own account without first obtaining the consent of the principal, otherwise the principal may repudiate the transaction and claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. First come to the example number 24. A directs B to sell A's estate. B buys the estate for himself in the name of C without first obtaining the consent of A. A informed B to sell the A's asset. B is the agent.
but B purchased the estate for himself in the name of C, but he has not taken the permission of A. In this case, A has the agent has involved himself in the contract in his own, अपना खुद को involve कर लिया. In that case, A, the principal can repudiate the same. What is the point saying? कि एजेंट अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता बगैर परमिशन के प्रिंसिपल. अगर ऐसा करता है तो प्रिंसिपल में रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर सकता है, और अगर कोई बेनिफिट कमाया है, क्लेम द फ्रॉम द एजेंट एनी बेनिफिट विच मे हैव रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन. और इस ट्रांजैक्शन कोई बिजनेस कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो भी प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है. तो नॉट टू डील on his own account without first obtaining the consent of the principal. Otherwise, the principal may repudiate the transaction, can cancel the transaction, and claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. See example number 25. A directs B his agent to buy a certain house for him. B tells A, it cannot be bought, and buys the house for himself. A may, on discovering that B has bought the house, compel him to sell it to A at the price he gave for it. What is the example? A appointed B as his agent. A appointed B as his agent for purchasing a certain house. A ने B को अपॉइंट किया, भैया एक ये घर है, खरीद लो मेरे ब्याह पर. B tells A it cannot be bought. B ने A को बोला कि भैया ये नहीं खरीदा जा सकता, ये घर है ही नहीं, बिकने के लिए है ही नहीं. बट आफ्टरवर्ड्स बी ने, जो एजेंट था, उसने घर अपने लिए खरीद लिया. नाउ द प्रिंसिपल, दैट इज मिस्टर ए, मे ऑन डिस्कवरिंग दैट बी हैज बॉट द हाउस, ही कैन कंपेल द एजेंट टू सेल द हाउस टू मिस्टर ए, दैट इज द प्रिंसिपल. अगर ए को बाद में मालूम पड़ा कि ये तो घर से अपने लिए खरीद लिया और मैंने कहा था मेरे लिए खरीदना है, अपॉइंट किया था, इस केस में प्रिंसिपल एजेंट को फोर्स कर सकता है कि भैया जो घर तुमने खरीदा मुझे बेचो उसी प्राइस में जो तुमने खरीदा है. Example 26. Mr. Ahuja of Delhi engaged Mr. Singh as agent to buy a house in West Extension area. Mr. Singh bought a house for rupees 20 lakhs in the name of a nominee and then purchased it himself for 24 lakhs. He then sold the same house to Mr. Ahuja for 26 lakhs. Means Ahuja of Delhi engaged Mr. Singh as agent to buy a house in West Extension area. Mr. Ahuja ने अपॉइंट किया सिंह को, भैया एक घर खरीदना है मुझे. सिंह ने क्या किया? Purchased a house for 20 lakhs and sold it to Mr. Ahuja for 26 lakhs. 20 लाख का खरीदा और खरीद के 26 लाख में वापस आहूजा को बेच दिया. In that case, because Ahuja has to make the additional payment of 6 lakhs, and that is the profit of 6 lakhs which is for Mr. Singh, can be recovered by Mr. Ahuja from Mr. Singh. आहूजा साहब ने कहा कि भैया ये घर खरीद लो, सिंह से कहा ये मेरे घर खरीद लो मेरे लिए. सिंह साहब ने क्या करा? 20 लाख में खरीदा किसी और के नाम से और वापस 26 लाख में आहूजा को बेच दिया. 6 लाख एक्स्ट्रा में 6 लाख का प्रॉफिट कमा लिया. अभी 6 लाख का प्रॉफिट कमाया, वो कौन रिकवर करेगा? मिस्टर आहूजा. किससे? अपने एजेंट से. टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल in case of his death and insolvent. Means if agent have some amount or any property belongs to the principal, so he should protect that property or amount if in case of death or insolvency of the principal. अगर कुछ पैसा प्रिंसिपल के पास, एजेंट के पास है, किसके ब्याह पर? प्रिंसिपल के ब्याह पर कोई प्रॉपर्टी है और डेथ हो जाती है प्रिंसिपल की या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को या पैसे को प्रिजर्व करके रखना. टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल. टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल. He may deduct therefrom all the monies due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business, and also such remuneration as may be payable by the agent. Means if agent receive any money on behalf of principal, he has to return it to principal. He has to hand over it to principal. But from this money, he can retain if any advance given to the principal,
he can retain the any expenses incurred by the agent on behalf of the principal and any remuneration which to be paid to the agent. जो पैसा आएगा प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट के पास, वो एजेंट को वापस करना है, लेकिन इस पैसे में से क्या क्या रोक सकता है वो? अगर कुछ उसने एडवांस दिया हुआ था प्रिंसिपल को, वो रोक सकता है। कुछ खर्चे जो हुए उसके एजेंट के किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर, वो खर्चे कट कर सकता है। और जो रेमुनेशन से रिसीव करना था प्रिंसिपल से, वो भी उसमें से पैसे रिड्यूस करके लेस करके वो प्रिंसिपल को हैंड ओवर। Not to use information obtained in course of agency against the principal. If agent receive any information during the contract with principal, he should not misuse that information. He should not use the information against that principal, and not to delegate the authority without the consent of principal. He can appoint sub-agent only with the permission of the principal. The rights of agent. Rights of agent. To retain out of any money received in agency all money is due to himself in respect of his remuneration and advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business. We have already read the point number 7 in the duties. Point number 7 in duties. Right of lien. Lien, remember? Lien we have discussed in the previous class. Right to retain. Right of lien on principal's goods, paper and other property until remuneration due to him is paid. Means if agent has any goods, paper or property, if principal has any goods, paper or property, he can retain it until the remuneration is paid. Right of indemnification, compensation against the consequences of all lawful acts done by him in exercise of authority conferred upon it. Means while doing his duties, while exercising the duties by the agent, if he suffers some loss, he can claim it from the principal. See example 27. B, an agent of A, entered into a contract on behalf of A with seat on supply of certain goods. A did not supply on time. B agent hai. B is the agent and A is the principal. B entered into contract on behalf of the principal with C to supply certain goods, but principal does not supply. Because of this, C filed a suit against B and B has to pay the legal expenses to defend the case. In this case, the agent can recover these legal charges from principal. Please read the example. To received agreed remuneration. When I started this unit, I told you the contract of agency may be without remuneration, but it should be clearly mentioned in the contract. But if now, if the remuneration is decided, amount is decided, the agent can claim. But if no agreement is silent, then he can claim the reasonable remuneration. A was employed an agent to sell a property on the term that he would be paid commission on the completion of sale. He produced a person ready and willing to buy, but the owner refused to sell. Hence, the agent was not entitled to commission as the sale was not completed. A has appointed, A is the agent appointed by principal. A is the agent appointed by principal to sell the property and finding the commission only after completion of the sale. He produced the proposed buyer, but the agreement could not be done. So in this case, as the sale was not completed, the agent cannot claim the remuneration. However, important point.
However, agent not entitled to remuneration for business misconducted. If he have done any misconduct in the business, he cannot claim the remuneration. कुछ गलत काम किया, उसने मिसकंडक्ट किया है, तो वो रेमुनेशन क्लेम नहीं कर सकता. Example 29, A employs to B to recover 1,000 rupees from C. Through the B's misconduct, the money is not recovered. B is not entitled to any remuneration for his service and must make good the loss. A employs B. B is the agent. Why B is appointed? For recovering the money from C. But because of the behavior or misconduct of the B, that is the agent, money cannot be recovered. B cannot claim the remuneration. And he also has to compensate the principal for this loss. A ने अपॉइंट किया एजेंट बी को, भैया तुम्हें सी से रिकवरी करनी है 1,000 रुपए. बी ने इतना मिसबिहेव किया, गड़बड़ किया, मिसकंडक्ट किया, जिससे क्या हो, मनी तो रिकवर हुई नहीं, तो बी रेमुनेशन क्लेम नहीं कर सकता, और जो लॉस हुआ प्रिंसिपल को वो भी उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन against consequences of act done in good faith. While performing his duties, if agent suffers some loss, he can recover from the principal. While performing his duties, if agent suffers some loss, he can recover it from the principal. Example 30. A at the request of P sells goods in possession of P, but which P had no right to dispose of. What is the example? A is the agent. Principal, on request of P, principal sells the goods which is in possession of the P. But that goods was not belongs to A. That goods was not belongs to P. P ने अपॉइंट किया A को कि तुम ये गुड्स बेच दो, मेरे पास रखा है, लेकिन वो गुड्स था ही नहीं, P का था ही नहीं. What actually happened? A does not know this and hand over the proceeds of the sale to P. A was not aware of the fact and handed over the proceeds to the P principal. Afterward, the T, the true owner of the goods, filed the suit against the A and recovers the value of the goods and cost. Now P is liable to indemnify. P is liable to compensate A for what he means A has been compelled to pay to T and for A's own expenses. A को P ने अपॉइंट किया कि भैया मेरा गुड्स बेच दो, वो गुड्स था ही नहीं P का. ए ने गुड्स बेच के सारी प्रोसीड पी को हैंडओवर कर दी. बाद में जो ट्रू ओनर था वो आगे उन्होंने मार लगाई किसकी? एजेंट की. तो एजेंट को सारा पैसा देना पड़ा. तो एज को जो नुकसान हुआ ना, वो किससे रिकवर करेगा? पी से रिकवर करेगा. द राइट टू इंडेमनीफाई इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट दोज एक्ट विच आर अनलॉफुल और क्रिमिनल इन नेचर. इट मींस if anything done by agent is unlawful, if anything is done by the agent is unlawful, he cannot claim the compensation from principal. He cannot claim the compensation from the principal. Please note down. Right of compensation for injuries caused by him by neglect on the part of the principal. It means if principal has made any negligence for the duties to be performed by the agent, principal has to compensate the agent. अगर प्रिंसिपल ने कोई लापरवाही की उन ड्यूटीज में जो एजेंट को करना था, उस केस में प्रिंसिपल कॉम्पनसेट करेगा एजेंट को अगर एजेंट को कोई लॉस होता है. See example 31. A employs B as a bricklayer in building a house and puts up the scaffolding himself. ईंटें लगानी है ब्रिकलेयर बिल्डिंग में, और जो उसकी बाड़ बंधेगी ना, जैसे ये बना हुआ है स्काफोल्डिंग, उन्होंने कहा ये स्काफोल्डिंग मैं खुद लगाऊं. बट स्काफोल्डिंग इज अनस्किलफुली put up and B is in the consequence hurt. A must make the compensation to. क्या है? A B जो एजेंट प्रिंसिपल था A, उसने जो स्काफोल्डिंग बहुत गलत तरीके से लगाई थी, उससे क्या हुआ? एजेंट को चोट लग गई, गिर गया. तो इस केस में प्रिंसिपल हैज टू कॉम्पनसेट द
Please read the example 31. Principal's liability to third person. For what cases, at what level principal is liable to third person? Third person means the person who was entered into contract with agent on behalf of the principal. Liability for the acts of agent. The principal is liable for all the acts of agent which are lawful and within the agent's authority. Within the scope of agent's authority. Means agent ने अगर जितना सो अलाउ किया गया था उतना ही काम किया है तो उसके लिए सारे कामों के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल. See example 32. A, being B's agent, is authorized by B to receive money on his behalf. He receives from C a sum of money due to B. C discharge of this obligation to pay the sum in question to B. Please read the example once again. A, being B's agent. A is the agent, B is the principal. A is authorized by the B principal to receive money on behalf of principal. Agent receives from C a sum of money due to B. Now C discharged for his obligation to pay the sum in caution to B. A एजेंट था, किसने अपॉइंट किया? बी ने कि भैया पैसा कलेक्ट कर लाओ सी से. सी ने पैसा ए को दे दिया, एजेंट को दे दिया. सी की लायबिलिटी खत्म. सी की लायबिलिटी खत्म. Liability when agent exceed authority. If agent do something more than what is not authorized, where the agent does more than he is authorized to do and the act done beyond his authority can be separated from what is within the authority, the principal is liable only for so much of what agent does as within authority. Agent ने कुछ ऐसा काम किया जिसके लिए ऑथराइज नहीं था. Agent has done something for which he is not authorized. Agent has done something for which he is not authorized, and that work can be separated. For if the separated, the principal will be liable only for that part for which he authorizes the agent. See the example 33. A authorizes B to procure an insurance on the ship. B procures a policy on the ship and another on the cargo itself. A is not bound to pay the premium for the policy on the car. क्या है? A ने ऑथराइज किया था B को कि शिप का इंश्योरेंस ले लो. बी ने क्या किया? शिप के साथ कार्गो का भी ले लिया, सामान का भी ले लिया. प्रिंसिपल इज लायबल ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर द शिप इंश्योरेंस, नॉट फॉर द कार्गो, क्योंकि कार्गो के लिए इसने ऑथराइज नहीं किया. Where the agent does more than he is authorized to do and the act done beyond the authority cannot be separated. Work cannot be separated. Work cannot be separated. In that case, principal is not bound to recognize the transaction. Principal can deny for the whole transaction. See example 34. A authorizes B to buy 500 sheep for him. B buys 500 sheep and 200 lambs for one sum of 6,000, lump sum payment. Now this cannot be separated, what is the price of sheep and what is the price of lambs. So in that case, A may repudiate the whole transaction. A ने ऑथराइज किया था B को किस लिए? 500 शीप का पेमेंट करना है, 500 शीप खरीद ले. बी ने क्या किया? पूरे 6,000 रुपए में 500 शीप और 200 लैम्प खरीद ली. ये अलग नहीं हो सकते क्योंकि पता नहीं शीप का प्राइस क्या है और लैम्प का प्राइस क्या है. तो इस केस में प्रिंसिपल पूरा ट्रांजेक्शन डिनाई कर सकता है. Consequences of notice given to agent. Any notice given to agent in the course of business transacted by him for the principal shall have the same legal consequence as if it had given to the principal. Simple meaning. If any information or notice given to agent, it will be presumed as it is given to the principal. अगर कोई notice या कोई information agent को दी जाती है principal behalf पर, तो ये माना जाएगा principal पास पहुंच गई. Please read the section 229.
Next point. Liability of principal inducing belief that agents unauthorized act were authorized. Liability of principal inducing belief that agents unauthorized act were authorized. See, when an agent has without authority done acts or incurred obligation to third person on behalf of his principal, the principal is bound by such act or obligation if he has by his words or conduct induced such third person to believe that such acts and obligation were within the scope of agent authority, section 237. This is the agency by holding out or agency by estoppel. Agency by holding out or by estoppel. अगर प्रिंसिपल ने किसी थर्ड पर्सन को ये बिलीव दिलाया कि फला पर्सन कोई एक पर्सन एजेंट है, तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, वो सारे एक्ट के लायबल हो जाए. सी एग्जांपल 35. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एग्जांपल. A tells P within the living of P that A is P's agent. P does not object the statement of A. Later on, T supplies certain goods to A who pretends to be acting as an agent of P. P is liable to pay the price to T. Principal's liability to third person is 6 point. Effect on agreement of misrepresentation or fraud by agent. If agent do something frauds, कुछ झूठ बोलता है या फ्रॉड करता है, in the course of their business for the principal shall have the same effect as if committed by the principal. अगर एजेंट ने कोई फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, तो ये माना जाएगा प्रिंसिपल ने किया है. थर्ड पर्सन कैन क्लेम दैट कॉम्पनसेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल कैन क्लेम फ्रॉम द एजेंट. Example 36. A being B's agent for sale of goods induces C to buy them by a misrepresentation, which he was not authorized by B to make. The contract is voidable as between B and C at the option of C. A कौन है? B का एजेंट है, किस लिए? गुड्स बेचने के लिए. C को फुसलाया झूठ बोल के, फॉर विच वो ऑथराइज नहीं था. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? voidable है. C कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है. Personal liability of agent means these are the cases where agent will be personally liable. A direct question can also be asked on this point. Foreign principal, if principal belongs to other country. Undisclosed principal, when agent does not disclose the name of principal, in that case agent will be personally liable. If principal is minor or unsound mind, then agent will be personally liable. If agent goes beyond the authority and that is not accepted by the principal, agent ने beyond authority काम किया और उनके लिए agent ने principal ने accept नहीं किया, तो agent personally liable हो जाएगा. When in the contract it was expressly provided that agent will be personally liable, अगर एक contract में लिखा है कि agent personally liable होगा, तो फिर उस केस में agent personally liable automatically हो जाएगा. When agent signs the contract in his own name and without making it clear that he is signing as agent, it means agent is signing the contract, but he is not showing that he is signing as an agent. Where the agent is working on behalf of the principal which is not in existence, जो दुनिया में नहीं हो, मर चुका हो या हो ही नहीं, where agent receives or pays money by mistake or fraud, then he will be personally responsible. Where the interest is, where the authority is coupled with interest, means लो भैया ये प्रॉब्लम आने वाली है, पॉइंट नंबर 9 सभी लोगों की. Where his authority is coupled with interest, authority के संग कुछ उसका benefit भी है एजेंट का. Agent is has some benefit in the authority, like auctioneer. Auction means you take the auction and get the commission. कि भैया ऐसा है ऑक्शन में माल बेच दो, जितना माल बिकेगा उसमें से कुछ कमीशन होगा. In such type of contract, if an agent may be the person responsible. Pretended agent, when agent pretends that he is agent and he is not the actual agent
and the principal does not ratify. एजेंट ये बता रहा है कि वो एजेंट है और एक्चुअल में एजेंट नहीं है, प्रिंसिपल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, देन इन दैट केस एजेंट विल बी पर्सनली लायबल. Rights of third parties. What are the rights of third parties? Third party means the party which are under the contract with the agent on behalf of principal. थर्ड पार्टी का मतलब क्या है कि वो पार्टी जिसने कॉन्टेक्ट किया एजेंट से किसी बिहाफ पर, एजेंट किसी बिहाफ पर कॉन्टेक्ट किया था प्रिंसिपल के पे. When agent does not disclose that he is acting as an agent, the third party has right against him as a he is principal. If agent does not disclose that he is working as agent, he will be liable as principal. If the principal discloses himself before the contract is completed, the other contracting party may refuse to fulfill the contract if he can show that he had the knowledge about the principal in the contract, he would not have entered into the contract. प्रिंसिपल का नाम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से जस्ट पहले आया. थर्ड पार्टी कह रही है कि अगर इसने जस्ट पहले भी बताया होता ना, अगर प्रिंसिपल का नाम मालूम पड़ा कब, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, या जस्ट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जस्ट हुआ है, अगर ये थर्ड पार्टी ये कह दे, द थर्ड पार्टी कैन शो दैट इफ ही हैड द नॉलेज, उसे पता होता कि ये प्रिंसिपल है तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा. When agent does not disclose that he is acting as an agent and the principal requires the performance of the contract, then the principal can obtain such performance subject to the rights and obligation subsisting between the agent and the other party to the contract. When agent does not disclose that he is acting as agent and the principal requires the performance of the contract, then principal can obtain such performance subject to the rights between the agent and the other party. अगर एजेंट ने ये नहीं बताया कि वो एज ए एजेंट काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल के जो राइट्स होंगे वो डिपेंड करते हैं एजेंट और अदर पार्टी के रिलेशन के बीच में. सी एग्जांपल नंबर 37. अमन सेल्स 1000 rupees worth of rice to Tarun and Aman also liable to pay 500 to Tarun. अमन ने 100,000 रुपए का माल बेचा तरुण को, तो अमन को कितने रुपए लेने हैं तरुण से? 1000 रुपए. अमन ऑल्सो लाइबल टू पे 500 टू तरुण, किसी और केस में अमन को 500 रुपए देने हैं. अमन इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ प्रताप इन द ट्रांजेक्शन, बट तरुण हैज नो नॉलेज नॉर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट अमन इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ प्रताप. अमन कौन था? एजेंट प्रताप का. अमन को लेकिन तरुण को ये बात पता ही नहीं थी, ना उस पर कोई रीजन था कि ये इसे ऐसा लगे कि जो अमन है वो प्रताप के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है. नाउ तरुण हैज राइट टू एडजस्ट ₹500 फ्रॉम 1000 रुपीज, भले ही इवन द अमन इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रताप, but it was not informed to Tarun. So the relationship between the Tarun and the Aman will be like principal and third party. So Tarun can adjust ₹500 which he has to recover from Aman. Pratap cannot compel Tarun to take the rice without setting off the amount. तरुण को पता ही नहीं था ना, तरुण क्या कर सकता है? तरुण वो 500 रुपए एडजस्ट करेगा. प्रताप ये नहीं कह सकता कि भैया ये एडजस्ट मत करो, सेट ऑफ मत करो. नहीं, आपने बताया ही नहीं था ये बात. In case where the agent is personally liable, the person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable. In cases where the agent is personally liable, we have discussed those cases. A person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable. यानी कि अगर जो केसेस हमने पढ़े जिनमें क्या था कि एजेंट पर्सनली लायबल है, उस केस में थर्ड पार्टी को राइट है या तो प्रिंसिपल को लायबल बनाए, या प्रिंसिपल को लायबल बनाए, या एजेंट को लायबल बनाए, या दोनों को लायबल. एग्जांपल 38. T enters into a contract with A to sell him 100 bales of cotton and afterward discovers that A was acting as agent for P. T may sue either A or P or both for the price of cotton. Fifth point, when a person who has made
a contract with an agent induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable, or induces the principal to act upon the belief that agent will be held liable, he cannot afterward hold liable the agent or the principal respectively. Please read this point carefully. Where a person who has made, now the person is third person, who has made a contract with agent induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable. एक थर्ड पर्सन ने कॉन्टेक्ट किया एजेंट से और उसे ये विश्वास दिलाया कि भैया जो तुम कॉन्टेक्ट कर रहे हो उसके लिए प्रिंसिपल ही लायबल होगा, आप लायबल नहीं होंगे, या और इंड्यूसेस द प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल के संग कॉन्टेक्ट किया और उससे ये बताया इसके लिए एजेंट ही लायबल होगा, तो बाद में थर्ड पर्सन अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता. मींस अगर थर्ड पर्सन ने ये एजेंट से कॉन्टेक्ट किया, उसे विश्वास दिलाया कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो केस फाइल केवल प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा, एजेंट के अगेंस्ट नहीं होगा, तो इस केस में एजेंट लायबल नहीं हो सकता. बाद में अगर थर्ड पर्सन मूड चेंज हो, इवन दैट प्रिंसिपल ही लायबल होगा. टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी खत्म कैसे होती है? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑपरेशन लॉ मीन्स कंपल्सरी. By act of parties, by agreement, by revocation, by renunciation of the agent by agency by agent. Let's see. By mutual agreement, आपस में तय किया था एजेंसी बनाने का, खत्म कर रहे हैं. By revocation, agency may be terminated by the principal. Principal ने एजेंसी रिवोक कर दी. Before the authority has been exercised, before the agent has performed, before the agent has performed. Note, the principal cannot revoke the agency where the authority coupled with interest. Authority is connected with the interest. Section 39, example 39, P gives authority to A to sell P's land and to pay himself out of the proceed the debt due to him from P. P ने authority दी A को, किस लिए? P की land बेच दो और जो पैसा आएगा उससे अपना लोन चुका लो. Now P cannot revoke the authority nor can be terminated by his insanity or death. क्योंकि इस अथॉरिटी में ए का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, जो पैसा आता उससे ए अपनी लोन को चुका देता, तो ये इस तरह की एजेंसी रिवोक नहीं की जा सकती. अथॉरिटी ऑफ एजेंट इज पार्टली एक्सरसाइज. कुछ काम हो गया है, कुछ नहीं हुआ, कुछ पेंडिंग है. Example 40, P authorizes A to buy 100 tons of rice for P and to pay for it out of the P's money remaining in A's hand. A buys 100 tons of rice for P in his own name so as to make himself personally liable for the price. Now P cannot revoke the authority so far as regards payment for cotton. P ने ऑथोराइज किया किसको? A को 100 टन राइस खरीदने के लिए, और क्या कहा कि उससे इसका पेमेंट किससे करना है? जो तुम मनी कलेक्ट करोगे उससे. ए ने राइस तो खरीद लिया लेकिन अभी पैसा नहीं आया, उससे पहले ही प्रिंसिपल एजेंसी रिवोक करना चाहता है. So in that case, P cannot revoke A authority because the payment is responsibility is that on agent. By renunciation of agency by agent, when agency revoke, we use the word revoke. It is revoked from by the principal. Renunciation means releasing the agency by the agent. An agency may be terminated by the agent by renouncing the business of agency. Renunciation may be expressed or implied. When agency for a fixed period, agent must compensate the principal for premature renunciation of agency. अगर पहले तोड़ रहा है एजेंट, तो if agent is revoking the contract of agency before the due date and principal has to suffer some loss, he can recover from the agent. A reasonable time notice should be given by the agent to the principal for renunciation of agency. By operation of law, compulsory performance of contract. If agent is appointed for doing any work and work is performed, agency is terminated. Expiry of time, if agency is stated for particular time. By death or insanity of the principal or agent. By insolvency of principal. By destruction of subject matter.
बाय प्रिंसिपल बिकमिंग एन एलियन एनिमी, प्रिंसिपल कौन हो जाए, दुश्मन देश का नागरिक हो जाए. बाय डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी वेयर कंपनी इज एन एजेंट और प्रिंसिपल, अगर कंपनी किसी केस में एजेंट है, प्रिंसिपल है और कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो एजेंसी खत्म. So this was the unit number 9 and last unit of Indian Contract Act. Now the time for queries on chat box. जो भी query है please पूछिए chat box पर. Sir please allow the chat box. Ajit sir please allow the chat box. Done, sir. Okay sir, thank you. If you have any query please ask. Else I'll start the LPL match 3. प्रिंसिपल अक्षित पूछ रहे हैं प्रिंसिपल लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी सेकंड एंड फिफ्थ पॉइंट. प्रिंसिपल लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, थर्ड पॉइंट कह रहा है अगर एजेंट अथॉरिटी के बियॉन्ड जाता है, एजेंट अथॉरिटी के बियॉन्ड जाता है तो प्रिंसिपल केवल उस काम के लायबिल होगा जितने उसने ऑथराइज किया है. अगर वो काम सेपरेट हो सकता है, अगर वो काम सेपरेट नहीं हो सकता है तो प्रिंसिपल पूरा काम रिजेक्ट कर सकता है. फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट बेटा हमने पढ़ा था एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, सेम पॉइंट है. अगर प्रिंसिपल ने किसी को ये विश्वास दिलाया हो कि एक अननोन पर्सन एजेंट है तो बाद में प्रिंसिपल डिनाई नहीं कर सकता. मैंने बोला था ये बात, समय आपने ध्यान नहीं दिया कि एग्जांपल 35 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एट द टाइम ऑफ एजेंसी बाय होल्डिंग आउट ऑफ एस्टॉपल. एग्जांपल 26, एग्जाम्पल 26 क्या था, आहूजा साहब ने सिंह साहब से कहा मेरे लिए घर खरीद लो. घर 20 लाख रुपए का था लेकिन आहूजा ने क्या, सिंह ने क्या किया, घर खरीदा 20 लाख में और 26 लाख में बेच दिया आहूजा को. तो 6 लाख का लॉस रिकवर कर सकते हैं आहूजा साहब किससे, सिंह साहब से. एंड 30th एग्जाम्पल, 30 एग्जाम्पल क्या था, ए एट द रिक्वेस्ट ऑफ पी सेल द गुड इन पोजीशन ऑफ पी. ए ने, एजेंट ने गुड्स बेच दिया जो पी के पास था पर वो गुड्स पी का था ही नहीं. अब जिसका था उसने क्लेम कर लिया एजेंट से, तो एजेंट को जो नुकसान हुआ वो किससे क्लेम करेगा, प्रिंसिपल से क्लेम करेगा. एनीथिंग एल्स, एनी अदर स्टूडेंट हैव एनी क्वेरी? ड्यूटीज ऑफ एजेंट, अक्षित अगेन पॉइंट नंबर 5 and 7. इधर कर दो इसको. Not to deal on his own account without first obtaining the consent of the principal means अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है. प्रिंसिपल ने अगर कोई चीज खरीदनी है तो आप अपनी चीज नहीं बेच सकते विदाउट फर्स्ट टेकिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल. इफ एनीथिंग इज डन बाय द एजेंट then principal may cancel the contract and also claim any benefit obtained by the agent in this contract. Point number 7, to pay some received from the principal. If agent receive any sum, any amount on behalf of principal, he has to hand it over to the principal. But from this point, from this amount, he can reduce the amount of remuneration, any expenses incurred by the agent on behalf of the principal, or any advance given by the principal to the given by the agent to the principal. Okay, Akshit, clear or not? Now Harshit, सर अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके डेब्ट एजेंट अपनी जेब से दे सकता है क्या? नहीं. एजेंट इज वर्किंग ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ओनली द प्रिंसिपल इज लायबल, एजेंट विल नॉट बी लायबल. एग्जाम्पल 30 थर्ड लाइन डाउट, अक्षित जी सुन लो भैया. एग्जाम्पल 13 में क्या था, आफ्टरवर्ड्स a true owner of the goods sues A and recover the value of the goods and cost. वही तो मैं कह रहा हूँ. गुड्स किसका था, कि थर्ड पर्सन का. बेचा किसने, एजेंट ने. किसके कहने पर, पी के कहने पर. जो ओनर था, ट्रू ओनर, उसने किससे क्लेम किया, एजेंट से. तो एजेंट अपना लॉस किससे क्लेम करेगा, प्रिंसिपल से. हो गया क्लियर अक्षित? एनी अदर स्टूडेंट, so that we can start the LPL match 3. Okay, let's start.
On whose insolvency the agent is terminated? Sub-agent, agent, principal, del trader. Under which circumstances agent become personally responsible? All as under fraudulent transactions, fraud, ultra wires. When agent is liable to pay compensation to principal, misconduct, negligence, both A and B, none of these. It is the duty of agent to protect and preserve the interest on behalf of the principal represent in case of death of principal, insolvency of principal, both A and B. None of these. Agent should not to deal on his own account without first obtaining the consent of the principal. Otherwise, the principal may repudiate the transaction, claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. C, either A or B, D, both A and B. If remuneration is not fixed, the agent has no right to receive any remuneration, right to claim a reasonable remuneration, right to claim remuneration as decided by the court, none of these. Akshay ji, your query is pretended agent is not actual agent. Yes. Okay. On whose insolvency the agency is terminated? Principal. Under which circumstances agent become personally responsible? All as under. When agent is liable to pay compensation to principal, both in case of misconduct and negligence. It is the duty of the agent to protect and preserve the interest on behalf of the principal representative in case of both death and insolvency. Agent should not to deal on his own account. Otherwise, the principal may repudiate both A and B. And last point, if remuneration is not fixed, the agent has the right to claim a reasonable remuneration. Mr. Dakshta, Akshat, Ridwik, अक्षय जी अनम्यूट करेंगे अभी रुको तो सही और प्लीज सॉर्ट आउट योर क्वेरीज 3 to 4 क्वेरीज ओके तो जो आपकी रेलेवेंट क्वेरी हो प्लीज वो जरूर पूछिए 3-4 क्वेरी जो आपके सॉर्ट आउट कर लीजिए क्योंकि अभी भी 4:10 हो चुका है ना थोड़ा सा वेट कीजिए भाई अभी जवाब तो दे दूं बच्चों को सर अल्ट्रा वायर्स मींस बियॉन्ड पावर्स ओके एनी अदर क्वेरी एनी अदर सर एक बार सब एजेंट और सब्सिडी एजेंट का डिफरेंस एक बार और बता दीजिए प्लीज हर्षित सी द पिक्चर principal, agent, and sub-agent. Right? Sub-agent is appointed by agent on his behalf, on his own behalf. It means for sub-agent, agent is the principal. But in case of substitute agent, principal relationship is like that. Agent and substituted agent.
means substituted agent is appointed by the agent on behalf of the principal, right? So principal is responsible for the acts of the substituted agent, but in case of sub-agent, principal is not responsible, the agent is responsible. Clear, Harshit? Sir, Ridvik is asking, sir, can a sub-agent can hire another sub-agent? No. Okay, Ridvik? Ma'am, are you there? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Yes. Please, अगर आप कुछ अक्षित अभी Yes. अनम्यूट कर रहे हैं बेटा. So first we will unmute Nandini. Okay, ma'am. Just a moment. Nandini? Hello, sir. Hello, beta. Sir, I have doubt in descriptive question, page number 2.134, in question number 3. Study module, Yes, unit number. unit number 5. Just wait, beta. Give me one minute. Unit number 5, descriptive question, page number 2.134. 134. Which question? Sir, in question number 3, I have calculated the answer. I have got 250, but in back answer is 500. Let me check the question. X entered into a contract with Y to supply him 1000 water bottles at ₹5 per bottle to be delivered at a specified time. Thereafter, X contracted with Z for the purchase of 1000 water bottles at ₹4.50 per bottle, and at the same time, told Z that he did so for the purpose of performing his contract entered into with Y. Z failed to perform his contract in due course, and market price of each water bottle on that day was ₹5.25 per bottle. Consequently, X could not procure any water bottle, and Y rescinded the contract. Calculate the amount of damage which X could claim from Z. In the circumstances, what would be your answer if Z had not informed about Y's contract? Explain with reference to the provisions of Indian Contract Act. यही है ना? Yes, sir. I'm just taking the answer. I'm taking from the third paragraph. Okay. The problem asked in the question is based on the provisions of section 73. Okay. In the instant case, X had intimated to the Z that he was purchasing water bottle from him for the purpose of performing his contract with Y. It means the case of special contract is there. Yes. Z had the knowledge of the special circumstances. Therefore, X is entitled to claim ₹500 at the rate of 0.5 paisa for 1000 water bottles, and 0.5 paisa difference between procuring the price of water bottle and contractor selling price to Y, being the amount of profit of X would have been made by performance of contract with Y. If X not informed, okay, you are saying that in case he was informed about the specific circumstances, he can claim ₹500 plus 750. Yes, you are saying na? Yes. Okay. I think it's some typing error, no doubt. But at this place, he can claim 500 for his 500 plus 750. No, but I have seen as the question says that calculate the amount of damages which X could claim from Z in circumstances. We have to calculate original damages here because special damages case is second question. I'm taking the problem at this page. What actually the contract price was? Contract price was
5 with Y. Okay. And the contract price with Z is 4.50. यही था ना? Yes. ठीक है. Water bottles 1000. But actual market price is 5.25. 25. Okay. If in case the actual loss is this one, 5.25 plus minus 4.50, 0.75 into 1000, 750. If not informed about the special circumstances, this is the ordinary damage. Yes or no? Yes. And if special circumstances is there, it is the amount of 0.50 into 1000. That is 500 also. Yes or no? Yes. Thank you, sir. Okay. Good Akshay? evening, sir. Yes, Akshay, please ask only 2 or 3 queries because time Only is two, less. only two or three queries, ma'am. Please, Yes, ma'am, allow yes, me to ask, yes, ma'am, please, please. yes, please. First, I would like to say good evening, Megha, ma'am. Good afternoon. Uh, Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, sir. In Unit 8, only one query, and in these two queries, sir. Sir, Unit 8. it's not Unit 8, sir. Sir, आपने बताया था कि जैसे मैं जल्दी जल्दी पूछता हूँ क्योंकि टाइम भी है। ये आपने बताया था जब क्वेश्चन यूज कर दिया प्लेज बाय पाउंडर पोजीशन वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्वेरी नहीं है, बस एक डाउट रह गया था उसमें कि स्टडी मटेरियल में 2.191 में कि क्वेश्चन यूज कर दिया जब 2.191. Just hold. 191 Just hold. 191. Which point? बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट में कंफ्यूज हो गया मैं। जब आखिरी की लाइन थी उसमें बताया गया था B फोनर point को क्या था? Right to retention of subsequent debt. 2.19 सर प्लेज बाय नॉन ओनर्स। Pledged by non-owners. ठीक है. Which point? B point. बी पॉइंट में आखिरी जो बताया था क्वेश्चन यूज कर दिया आखिरी फिर पॉइंट में क्या था? But the contract has not been designed at the time of pledge. The pony acquires a good title to the goods. मैंने बताया था, अगर आपको याद हो बेटा, हाँ कि मुझे अगर याद है सर। कॉन्ट्रैक्ट, लिसन, कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइडेबल है, बताया था मैंने, ए ने एक गन खरीद ली। एक पेज लेते हैं, जस्ट वेट। ए आखिरी ने पेज ले एक लो। गन ए ने एक गन के बेसिस पर बी से एक एक्टिवा खरीद ली। कितने रुपए की खरीदी? 50 रुपए की, मान लीजिए। ठीक है, अब एक्टिवा किसके पास आ गई? ए के पास आ गई। अब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, बट बिफोर द बी मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, ए ने उसको क्या कर दिया? प्लेज कर दिया। किसके पास? सी के पास। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड। ये ये सर पॉइंट कह रहा अब है। हाँ जी, हाँ यस सर अब समझ में आ गया सर। आ सर गया। और जैसे एक सर मोबाइल फोन पड़ा है रोड पे और रिपेयर 5000 और थोड़ा प्लेज जोर कर। से बोलो बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ ना आप सुनाई दे रही है सर आवाज। हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। मिस्टर एक्स ने डिफेक्टिव मोबाइल फोन था उसने ढूंढा था रोड पे और उसने उठाया था रिपेयर के लिए गेट इट रिपेयर के लिए 5000 और वो प्लेज करता है मोबाइल फोन को 2000 और ट्रू ओनर कैन रिकवर द मोबाइल फोन 5000। तो और एक और था ए प्लेजेस इज ज्वेलरी वर्थ रुपीज 1 लाख विद बी फॉर एग्जाम्पल सी एडवांस। चाहिए 34। हाँ तो उसमें मुझे ये पूछना था कि मतलब ट्रू ओनर रिकवर कर सकता है क्या 5000 के लिए और प्लेज कर सकता है देखिए क्या 70,000। था, मिस्टर एक्स ने एक डिफेक्टिव मोबाइल मिला, उन्होंने उठाया, रिपेयर कराई, 5,000 रुपये रिपेयर में लग गए। उसके बाद क्या हुआ? उसने मोबाइल प्लेज कर दिया। ही लेटर प्लेज द मोबाइल फॉर 2000। किसने कर दिया? जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड था। द ट्रू ओनर कैन रिकवर द मोबाइल फोन बाय पेइंग रुपीज 5000। कह रहा 5,000 रुपये देगा, क्योंकि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना ट्रू ओनर की, वो केवल उतने अमाउंट की थी जो रिपेयर में खर्च हुआ। 2,000 की लाइबिलिटी नहीं है उसकी। ठीक है। यस सर। और यस 34 सर। में क्या है? ए प्लेज इज ज्वेलरी वर्थ रुपीज 1 लाख। ए ने अपनी ज्वेलरी 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की ज्वेलरी प्लेज की, किसके लिए? 70,000 के लोन के लिए। अब बी ने उस ज्वेलरी को आगे प्लेज किया 90,000 के लिए, लेकिन बी का राइट कितना था? केवल 70,000 का था ना।
बी ने जो लोन दिया वो 70,000 का दिया है, तो जो राइट था उसका 70,000 का था केवल, इसलिए इसलिए उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो केवल 70,000 के लिए इसको प्लेज कर सकता है। ठीक है सर, अब यूनिट 9 यही थी डाउट, छोटा सा कंफ्यूजन रह गया था। यूनिट 9 अब। यूनिट 9 स्टडी मॉड्यूल। ये सर स्टडी मॉड्यूल ओनली सर, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए उन पॉइंट्स में, तो मैं जल्दी जल्दी पूछता हूँ। पहले पहले रेटिफिकेशन कैन नॉट इंजूर थर्ड पर्सन में एग्जांपल 13 और पेज नंबर 2.206। 2.206 रेटिफिकेशन कैन नॉट बी। कैन नॉट इंजूर थर्ड पर्सन, सिर्फ इसमें सर, इसमें मुझे ये ये नहीं बहुत समझा। सिंपल पॉइंट, हमने इसमें एग्जांपल भी लिया था कि रेटिफिकेशन से ऐसा ना होना चाहिए कि थर्ड पार्टी को लॉस हो जाए। एग्जांपल याद है क्या था कि एक प्रिंसिपल पी ने एक लैंड दी है लीज पर, किसको दी है? टी को। हाँ, लीज लीज वाला ठीक एग्जांपल आप डिस्कस करा था है ना? आपने। टी को दी है कितने दिन के लिए? उसने कहा अगर आपको टर्मिनेट करना हो 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। 3 मंथ का नोटिस समझते हैं कि 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके। यस सर। अब क्या हुआ कि एक कोई अनजान बंदा आया ए, उन्होंने कहा मैं एजेंट हूँ और टी से खाली करो। टी से क्या कहा? कल खाली कर दो। पी उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। अगर रेटिफाई करेगा तो क्या होगा? टी को लॉस होगा ना। टी को नॉर्मली 3 महीने नोटिस मिलना चाहिए, यस लेकिन सर। एजेंट ने तो हड़काया कि भाई जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तो इसलिए अगर ये वो प्रिंसिपल ए के इस बात को रेटिफाई करता है तो टी को लॉस हो जाएगा, उसे तुरंत घर खाली करना पड़ेगा। तो ये इस तरह के एक्ट प्रिंसिपल रेटिफाई नहीं कर सकता। यानी क्या कहा उसने कि कोई ऐसा काम जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हो, उस काम को प्रिंसिपल रेटिफाई नहीं कर सकता। नहीं अभी कर क्लियर हुआ सकता क्या? सर। अब क्लियर हो गया सर, आपने बता दिया। और ड्यूटीज ऑब्लिग 2.1 2.2111 2.1 2.211। 211 फटाफट पूछते हैं। 2.211 ड्यूटीज एंड पहले ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट, विच पॉइंट? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कंफ्यूजन। फर्स्ट पॉइंट में मुझे ये नहीं समझा कि जैसे कस्टम्स प्रिवेल करता है, बिजनेस सेम काइंड एजेंट कंडक्ट करता है, तो एजेंट किसी लॉस के लिए सस्टेन नहीं हो सकता क्या प्रिंसिपल में? एग्जाम्पल ट्वेंटी हाँ फोर बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसमें मतलब अगर प्रॉफिट अक्रूस होता है तो उसको अकाउंट करना पड़ेगा। तो 24 में कंफ्यूजन रह गया, एग्जाम्पल 24। Example 24, A an agent is engaged for managing the business of B. B principal हो गया, A agent हो गया. In which it is the custom to invest money at hand for interest. एक कस्टम है उस बिजनेस के, जिस मार्केट में वो चल रहा है ना, व्यापार बिजनेस चल रहा है, उसमें क्या कहानी है कि भाई जो पैसा आ रहा है गले में आ रहा है, पॉकेट में आ रहा है, यस उसे सर। जमा कर दो, इन्वेस्ट कर दो इंटरेस्ट पर। अब ए ने एजेंट ने ऐसा नहीं किया। अब उससे क्या हुआ? प्रिंसिपल को लॉस हुआ ना इंटरेस्ट का। यस तो सर। वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है एजेंट से। ये तो हो गया 24। और ठीक दूसरा है। वाला पॉइंट, रीजनेबल और कैरेंस स्केल। रीजनेबल रीजनेबल कैरेंस केयर एंड स्केल। स्किल। रीजनेबल केयर यस एंड सर। स्किल वो क्या कहता है कि एजेंट शुड डू द वर्क विद रीजनेबल केयर एंड स्किल फॉर विच ही डू एज पर हिज ओन। मतलब जो अपने लिए करता वही वो उससे के लिए करना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल में कौन से में दिक्कत है आपको? 26 और 27। ये तो उसके साथ सिमिलर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझने की कोशिश करी, समझ में आ गया। 28 और 29 में कंफ्यूज हो गया मैं बस। एग्जाम्पल 28 29। उसमें मैं कंफ्यूज हो गया। एग्जाम्पल 28 और 28 क्या है? एन इंश्योरेंस ब्रोकर एम्प्लॉयड बाय बी टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन द शिप omits to see that usual clauses are inserted in the policy. ए एक इंश्योरेंस ब्रोकर है, एजेंट है इंश्योरेंस कंपनी का। किसने एम्प्लॉयड किया उसे? बी ने एम्प्लॉयड किया है। किस लिए? शिप का इंश्योरेंस कराना है। लेकिन ए ने जो पॉलिसी में क्लॉजेस थे वो नहीं पढ़े, एंड द शिप इज लॉस्ट। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द omission nothing can be recovered from the underwriters. क्योंकि एजेंट ने पढ़े ही नहीं थे क्लॉज, इसकी वजह से क्या हुआ? इस लापरवाही से क्या हुआ? उसको कोई क्लेम नहीं मिल पाया। नाउ दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए टू कॉम्पनसेट द प्रिंसिपल। कि भाई अगर मैंने आपको अपॉइंट किया अपना एजेंट, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सब चीज क्लॉज पढ़ो। आपने क्लॉज नहीं पढ़े, मुझे लॉस हुआ तो मैं आपसे रिकवर करूंगा। एंड 29 क्या कहता है? ए अ मर्चेंट इन इंग्लैंड डायरेक्ट बी हिज एजेंट मुंबई हु एक्सेप्ट द एजेंसी टू सेंड हिम 100 bales of cotton by a certain ship. बहुत सिंपल एग्जांपल था ये, हमारे मेरे नोट्स में सीमेंट का एग्जांपल था। क्या था एग्जांपल? कि एक मर्चेंट बिजनेसमैन है इंग्लैंड में, उसने मुंबई के एजेंट में कहा कि भैया मुझे 100 बंडल भेज दो कॉटन के। प्राइस क्या था? तो उसने प्राइस छोड़िए, उसमें
अब क्या हुआ, एजेंट ने बंडल भेजे ही नहीं कॉटन के, तो जो नई बिजनेस से लॉस हुआ वो किससे रिकवर होगा, एजेंट से रिकवर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेरी अब सर, रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी में रेवोकेशन एंड रेनंसिएशन 2.220 2.221। एक मिनट बेटा जी, हाँ जी सर। विच पॉइंट? उसमें ए और बी पॉइंट में। ए क्या है, रिवोकेशन। प्रिंसिपल चाहे तो अपनी एजेंसी तोड़ सकता है, लेकिन अगर एजेंट ने काम शुरू कर दिया है, एजेंट ने काम शुरू कर दिया है तो प्रिंसिपल अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता। Agency may be terminated by the principal revoking the authority of the agent. Principal may revoke the authority given to his agent any time before the authority has been excised. ठीक है, अथॉरिटी अगर एक्साइज हो गई तो रिवोक नहीं हो सकती है। इसमें कोई एग्जांपल में डाउट है क्या? सर इसमें मुझे कंफ्यूज हो रहा है, बाकी सारा पार्ट और हो गया, ये लास्ट है रेवोकेशन अथॉरिटी। इसमें मुझे रेवोकेशन में जो है ना, शुरू का समझ में आ गया, एजेंसी टर्मिनेट होती है, आपने बताया भी था अभी कुछ मिनट ठीक है, पहले। प्रिंसिपल रिवोकिंग अथॉरिटी एजेंट, फिर प्रिंसिपल तोड़ सकता है, एजेंसी खत्म कर सकता है कि भैया हमें नहीं रखना तुम्हें एजेंट। प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है अथॉरिटी एजेंट एनी टाइम बिफोर। उसके एक मिनट बाद देखो, मुझे, सुनो हाँ। सुनो, यस सर। एजेंट, प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथराइज किया है किस काम के लिए, कि आप प्रॉपर्टी बेच के आओ। ठीक है, एजेंट ने अगर प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया बेचने का, तो फिर प्रिंसिपल उस एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है, अभी क्लियर हुई बात, कंसेप्ट? इतना क्लियर है सर। अब आगे क्या प्रॉब्लम है? आगे मुझे प्रॉब्लम है इसमें, प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता एजेंट, अथॉरिटी बीन लिखा है द एक्सरसाइज। प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू द एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज पार्टली सो फार एज रिगार्ड सच एक्ट और ऑब्लिगेशन एज अराइज फॉर द एक्ट ऑलरेडी डन इन द एजेंसी। वही तो मैंने कहा, अगर एजेंट ने काम शुरू कर दिया है तो प्रिंसिपल अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता, एजेंसी रिवोक नहीं कर सकता। एग्रीड? अग्रीड सर। 54 में प्रॉब्लम है मुझे इसमें। क्या पूछना है? 54 और 55 में 54 क्या क्या मतलब? है कि ए ऑथराइज बी टू बाई 100 bales ऑफ कॉटन ऑन अकाउंट ऑफ ए एंड टू पे इट, पे फॉर इट आउट ऑफ द एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड। ए ने ऑथराइज किया बी को कि आप 1000 बंडल कॉटन के खरीद लो, किस और जो उसका पेमेंट कहां से करना है, कि जो आप मनी रिकवर करोगे मेरे बिहाफ पर उसमें से पेमेंट कर दो। तो एजेंट ने खरीद लिया, अभी पेमेंट करना बाकी है, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा भैया हम एजेंसी खत्म कर रहे हैं। नहीं कर सकते ना, फिर प्रिंसिपल जो एजेंट है वो पैसा कहां से देगा? एजेंट पैसा जब देगा जब वो एजेंसी चलती रहेगी और रिकवरी होगी उससे पेमेंट करेगा। अदरवाइज क्या होगा, एजेंट की पर्सनल पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी। अभी समझ में आया क्या? तो अभी इसका मतलब ये, तो हम्म, मुझे इसमें इसमें पूछना चाह बता रहे हो, तो मतलब ए ने ऑथराइज करा बी को 1000 बेल्स ऑफ कॉटन पे, और पे करा एस मनी, पे फॉर इट आउट ऑफ एस मनी, मतलब ए की मनी कि में से या ए से। के पास जो मनी आएगी किसके ब्याह पर, प्रिंसिपल के ब्याह पर, उसमें से पेमेंट करना है। तो बी ने फिर 1000 बेल्स कॉटन खरीदे उसके खुद के इन इस ओन ने, मतलब खुद के नाम पे, मेक हिमसेल्फ नहीं नहीं, पर्सनली इन हिज लायबल। ओन नेम सो एज टू मेक हिमसेल्फ, नहीं, खरीदे, उसने अपने नाम से खरीदे तो पेमेंट उसे करना पड़ेगा ना, एजेंट को करना पड़ेगा ना प्रिंसिपल के ब्याह पर पेमेंट, क्योंकि उसने एजेंट अपने को नाम से करना खरीदे। अब एजेंट पैसा को है कर, नहीं उसके पास, एजेंट के पास, और पैसा कहां से आएगा, जब वो एजेंसी चलती रहेगी तो जो कलेक्शन होगा एजेंट के द्वारा किसके किसका, प्रिंसिपल के पैसे का, उसमें से पेमेंट करेगा। तो जब तक पैसा नहीं आएगा एजेंट के पास, प्रिंसिपल उस एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहा है। मतलब ये रिवॉक नहीं कर सकता नहीं उसको कर सकता जब तक अथॉरिटी। पैसा, जब तक एजेंट के पास पैसा नहीं आ जाए पूरा। तो दूसरे में कैसे कर सकता है सर 55 में दूसरे में कैसे ये? कर सकता है, ए ऑथराइजेज बी टू बाय 1000 bales ऑफ कॉटन ऑन अकाउंट ऑफ ए टू पे द इट आउट ऑफ द एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड। बी बाइज 100 bales ऑफ कॉटन इन एज नेम, ए के नाम में खरीदी है ना उसने। पहले क्या था, 54 में क्या है, अपने नाम में खरीदी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एजेंट की है। 55 में क्या है, किसके नाम में खरीदी है उसने, प्रिंसिपल के नाम में खरीदी है, तो प्रिंसिपल लाइबल होगा ही होगा। अगर वो एजेंसी रिवोक भी हो जाती है तो थर्ड पार्टी किससे पैसा क्लेम करेगी, प्रिंसिपल से क्लेम करेगी। दोनों में अंतर है। 54 में क्या था कि इस इन इज परचेज इन इज ओन नेम, agent has purchased in his own name, but in case of example number 55, agent has purchased in the name of principal, so principal will be liable in 55, but in तो 54 agent will be liable for third party, सर right? ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट रह गया था, एजेंट में मतलब रेनाउंस कर सकता है बिजनेस एजेंसी एजेंट में जब। जब
एजेंसी प्रिंसिपल तोड़ेगा तो उसे बोलेंगे रिवोकेशन, जब एजेंट मना करेगा काम करने के लिए उसे बोलेंगे रिनंसिएशन। तो स्टडी मटेरियल में से डाउट था ये लेंथ ऑफ नोटिस लाइन से। If the agent renounces without proper notice, the length of notice is to be determined by the same principle which apply to the revocation of by the principal। कह रहा है कि रिनाउंसिएशन करना, एजेंट ये तो नहीं कहेगा चुपचाप से रात को सपने से जागा, उन्होंने कहा भाई साहब कल से एजेंसी नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर नोटिस देना है, रीजनेबल इन्फॉर्म कर टाइम देना है। यही बात प्रिंसिपल के लिए भी लागू होगी, रिवोक करने के लिए भी, कि एक तो इसका प्रॉपर। तो जी, हाँ, उसका इसका थोड़ा सिंपल उदाहरण में समझाओ ना, ये समझ में आया, सिंपल तो ये उदाहरण दो। है कि मान लीजिए मैंने आपको अपॉइंट किया प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और आपका मन नहीं है काम करने का मेरे लिए, कि सर का काम नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए, तो आप पहले मुझे थोड़ा टाइम देके इन्फॉर्म करोगे ना, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कि तुरंत आप कहोगे सर मैं नहीं कर रहा काम आपका। तो यू शुड गिव मी सम टाइम, आपको एक टाइम का नोटिस देना पड़ेगा, सर 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं, 2 दिन में अगर मकान नहीं बिका आपका तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। यानी एजेंट और प्रिंसिपल जो भी खत्म कर रहा है, एक रीजनेबल टाइम से पहले इन्फॉर्म करे। ओके। अगर एजेंट, हाँ समझ में गया सर, अगर एजेंट रेनाउंस करता है बिना प्रॉपर नोटिस के, तो ही विल हैव टू मेक गुड एनी डैमेज बाय और अगर रिजल्टिंग टू द। आपने अचानक से बताया और मुझे नुकसान हो गया तो मैं आपसे क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, ऑल यूनिट 9 क्लियर, सो कंप्लीटेड सर। एंड थैंक यू। सॉरी सॉरी फॉर एक चीज के लिए सॉरी कहना है, थोड़ा मैंने टाइम लिया, लेकिन डाउट थी, क्लियर होनी जरूरी थी, मैम को भी सॉरी कहना था। ओके, तो थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। ऑल, and your class was very nice with good examples, so you made Indian contract act easy sir, thank you sir. थैंक यू। अक्षित, 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 please unmute yourself. Yes ma'am, good evening ma'am. Yes, good evening. अक्षित, आपका फीडबैक मेरे पास एक भी नहीं आया अभी तक रिटर्न में। वो बिजी था एग्जाम्स में, टॉर्चर था दोनों नहीं तरफ, तो एक तरफ। आपने तो एग्जाम्स दिए ही नहीं ना, तो आई हैव रिसीव्ड एवरी फीडबैक ऑफ ईच क्लास एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल फीडबैक फ्रॉम यू। सॉरी मैम, वो बाहर गया था, वो तिरचिंग गोड जाना एक दिन, एक Now दिन from आना। Monday onwards, na Monday onwards, I will take your queries only if I received a positive feedback from your टुडे side. टुडे आई विल गिव फॉर ऑल टुगेदर After 9 every यूनिट्स। class, after मैम ले, every class. टुडे ऑल्सो एजेंसी कंप्लीटेड ऑल क्लियर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं जरूर दूंगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे सर ने एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया थे। इस बार के नोट्स और पिछली बार के नोट्स से इस बार न्यू न्यू एग्जाम्पल फ्रेम करे, मेरे तो कोई डाउट नहीं रह गया, मतलब नए नए, और थैंक यू हमारे लिए, मतलब सोचने के लिए, न्यू न्यू इम्प्रूवमेंट करने के लिए, न्यू न्यू एग्जाम, बस सेल्फ असेसमेंट नहीं था, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी एमसीक्यूज आते ही नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, सेल्फ असेसमेंट नहीं था, उसकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि लॉ में डिस्क्रिप्टिव आते हैं क्वेश्चंस। तो Yes. लेकिन सर ने इस बार ना आखिरी में, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस खूब लिए थे, आज नहीं ले पाए क्योंकि टाइम की वजह से, समझ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि we have to वेबिनार, take your queries also, ना। हाँ यस, लेकिन मैं वेबिनार मुझे पता है 3 और 4 को है, तो सर लेंगे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस, May 26 का एक क्वेश्चन था, सर ले लेंगे ना। ठीक है, चलो, जो भी आपने अभी फीडबैक बोला वो प्लीज उसको भर के आप भेजिए हमें, अभी जो भर भी रहा हूँ, क्लास खत्म होने थैंक यू तक। मैम, इट वाज अ नाइस ऑल क्लासेस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, थैंक यू। नाउ आई एम रेडी फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओहो, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Thank you for the wonderful classes. All the we have completed all the 9 units today, and it was a wonderful experience with Sudeep sir. And from Monday onwards, we will start our Sales of Goods Act 1930 with the new faculty. And it's a request to all dear students to complete the contract act till Monday, because there is no class on this Sunday. There is no class of the business law paper. We are having next class on Monday, so you can complete your Indian Contract Act by Sunday, so that you can come prepare for the Sales of Goods Act 1930. The notes and assignment for Monday class also we have uploaded on the website. So complete the Indian Contract Act. The 20 to 30% weightage has been assigned to this chapter. Around 32 marks paper questions come from these units, and all the questions we have discussed during LVC class, be it covered in your notes, be it covered in your assignments, be it covered in your study material, may come in your exams. So fully prepare, first complete the study material, then practice the questions from all the publications. By next week, we will surely
upload the RTP, and very soon the result for May 2026 is about to come by the next week, or probably by in the first week of July. We cannot say about the foundation result. So once the result for foundation is announced, we will upload the suggested answers also. So you will get 2 new publications within 10 to 15 days. So please prepare the complete chapter from the study material so that you can devote your time for the practice as well. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes. Technical team? Yes, please end the session. Thank you. Thank you, sir.